Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 71 for that topic body fluids and circulation. As you know better that we have been learning very interesting and very important article from the topic internal structure of the heart. That lecture number 69 70. So do watch that lectures along with this so that you will get complete article internal structure of heart. In the earlier two videos regarding this 69 70, I explained about the internal structure up to the points like this. First of all, two auricles we have explained and how that blood received by that two auricles, that I explained. Then auriculoventricular openings along with their walls and the role of the walls, bicuspid wall, tricuspid wall, that also I have given in the last video. Now the next part is the ventricles that you have to discuss. Ventricles are the posterior chambers of human heart. They are larger than auricles, atria. Then these two ventricles are internally separated by a partition known as interventricular partition or IVS. दिया है क्या नाम देखो यहाँ पे दिया होगा डेफिनेटली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे दिया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये जो बीच में दिखाया है दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और आईवीएस which separates the two ventricles. And you will notice that the left ventricle is larger than that of the right ventricle. Left ventricle is larger than the right ventricle. Another very important thing, the ventricles are pumping chambers. Blood pumping chambers are ventricles and blood receiving chambers are auricles. जो ब्लड रिसीव करते हैं वो एट्रिया है और जो ब्लड पंप करते हैं वो क्या है? They are the ventricles, auricles and ventricles. And ventricles are, that's why, thick-walled, very much thick-walled than that of the auricles. एट्रिया की तुलना में वेंट्रिकल्स सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड है. तो देखो मैंने वेंट्रिकल्स के बारे में क्या क्या पॉइंट बताए. दैट वेंट्रिकल्स आर फॉर्मिंग द पोस्टेरियर चेंबर्स ऑफ द हार्ट. दे आर blood pumping chambers and hence they are very much thick walled. Then another very important thing is that both the ventricles are internally separated by interventricular septum. Left ventricle is larger than right ventricle. Okay. Now right ventricle is concerned with the deoxygenated blood because that is connected with the right atrium. And left ventricle is connected with concerned with that oxygenated blood because that is joined with the left ventricle, left atrium. Okay. अब देखो क्या होता है. From right atrium, one blood vessel, big blood vessel is arising. ये right atrium से यहाँ पर अभी एक के ऊपर एक है, इसके वास्ते ध्यान में नहीं जाता जल्दी. मैंने पहले भी आपको बताया था that ये ऐसा, suppose this is that pulmonary trunk going there from the right ventricle. Right ventricle से आगे pulmonary vein जा रही है. Then aorta is coming from the left ventricle. तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा overlapping है. ये pulmonary trunk ऐसी है and aorta is going like this. Pulmonary trunk is arising from right ventricle. Pulmonary trunk is arising from right ventricle. And at that opening also there are present typical valves known as the semilunar valves. उस ओपनिंग को भी ऐसे सेमिल्यूनार वॉल्व्स होते हैं. सेमिल्यूनार्स का मतलब हाफ मून शेप. सेमिल्यूनार. ओके. चंद्रकोर रहती है वैसी, ये चंद्रकोर जैसे निकालते हैं ना वैसा. सो दिस इज नोन एज सेमिल्यूनार वॉल. ओके. तो ये सेमिल्यूनार वॉल्स आर प्रेजेंट देयर एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड आल्सो एट द बेस ऑफ aorta. They prevent the backflow of the blood from that blood vessels into the ventricle again. काम एक ही है.
अब क्या देखो, पर्टिकुलरली राइट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द पल्मोनरी ट्रंक। ये डॉट डॉट लाइन से मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड जाएगा इम्प्योर ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। ऊपर जाने के बाद उसके दो डिवीजन होते हैं, वन इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, अदर इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, and left pulmonary artery is carrying the deoxygenated blood to the left lung, and right pulmonary artery is carrying the deoxygenated blood to the that right lung. दो lungs है हमको मालूम है, तो राइट लंग को जाने वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट लंग को जाने वाली लेफ्ट पल्मोनरी, ये ब्लू जो दिखाई है, एंड दैट आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ध्यान में आ रहा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। यानी ब्लड का फ्लो आप ध्यान में ले लो, आप यहाँ पे वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Deoxygenated blood collected from all the lower organs and upper organs of the body, they are carried by the different veins, and finally that blood enters into the right atrium through superior vena cava and inferior vena cava. Also, the deoxygenated blood received from the wall of the heart is opening into the right atrium there to the coronary sinus, and all that deoxygenated blood collected from all organs of the body will be collected in the right atrium. Now, when the right atrium will contract, that deoxygenated blood will come into the right ventricle, to that right atrioventricular opening. And from there, when ventricles will contract, that deoxygenated blood will be pumped into the pulmonary trunk, and then left pulmonary artery will carry that deoxygenated blood to the left lung, and right pulmonary artery will carry that deoxygenated blood to the right lung for purification or oxygenation. बहुत ही सिंपल है। ओके, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या कथा है। Left ventricle is opening into the aorta, the biggest blood vessel. Moreover, it is the origin point of the arterial system. Arterial system का ये origin point है. So that is aorta. Left ventricle is opening into the aorta, and aorta is giving different branches. Some branches will go up and will supply the blood to all different parts of that anterior region by the different arteries. And the lower part जो है, that will joining into that dorsal aorta, and that is giving different branches, and that will give blood to the different parts of the lower side. तो ये आयोटा है। आयोटा का ओरिजिन कहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां पर भी सेमिलिनार वॉल्व्स है। So whenever valves pressure is applied, valve will open, blood will go up, and then valves will again come down once the pressure is lost. That will produce another sound, dub, और वो है सेमिलिनार valves, okay, to prevent the backflow of the blood. So blood कैसा होता है, देखो, oxygenated blood will be received by the left atrium through the pulmonary veins brought from the lungs there. Then that oxygenated blood from left atrium will be pumped into the left ventricle, and from left ventricle that oxygenated blood will be pumped into the aorta for distribution. So easy. यानी यहाँ पे जो भी आने वाला है पार्ट, पर्टिकुलरली राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, ये जो है, ओके, दैट विल बी पल्मोनरी ट्रंक, वो ब्लू होना चाहिए, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट atrium to left ventricle, and from left ventricle to the aorta. Okay, so अच्छी तरह से ये पढ़ लो. All that part is very easy to learn. उसको बार बार रिवाइंड करके देख लो, and I'm sure, I'm confident you will definitely prepare the article very properly. तो तीनों भी लेक्चर्स एक साथ अगर देख लेंगे, that you will complete the internal structure of heart article very nicely. Okay,
सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टू लर्न द वर्किंग ऑफ द हार्ट. टिल देन, गुड बाय. So do like and share this video to your friend circle and do subscribe to my channel Kateswar Biology and Kateswar Biology Shorts. Thanks a lot.